Okay. Okay, welcome to this session. Today we have invited Dr. Mehtab from Qatar, and in the first session he's going to present about development intervention, improving lifestyle and health related quality of life. So this session is going to be very interesting. You guys have to, listen very carefully. If you have some queries, you can ask Dr. Mehtab. Please welcome Dr. Mehtab. You can just speak to this, and this is the pointer. So I can change. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing good. My name is Mehtab and I am actually a genetic consultant. I am doing genetic counseling. My startup name is Gene Cure, and I am doing genetic counseling in Islamic International University, Islamabad. This presentation is actually about genetic-based intervention, improving lifestyle and health-related quality in years of life. This is actually a genetic counseling-based educational intervention for cancer, genetic diseases, and also for other metabolic diseases, viral disease, and autoimmune diseases. So if you have any health-related phobia, you can actually consult me and have your problem solved. There are different hallmarks of cancer. We only know that cancer is little and horrible, but cancer is also a solution, not a problem. You might have heard that most of the problems we are actually seeing in the world are actually solutions. But when we look at those problems at a broader angle, then we would be able to see how that problem is also a solution to the different problems surrounding that problem. So my genetic counseling for cancer is actually about what is the good that cancer does. You might have heard in your phone calls like there is a continuous threat being given that cancer is something horrible or lethal, but it's actually also a solution to different problems. So in this presentation, you will get an idea of how that specific disease is also a solution. Okay. ज़्यादातर लोग कैंसर को एक जानलेवा और ये चीज समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ जानलेवा नहीं, जानदेवा भी है. तो किस तरह कैंसर जानदेवा है उसके बारे में आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा. The counseling that I am doing is actually psychoneuroendocrine genetic engineering. Like how you might have heard about psychoneuroendocrinology, you might have heard about the psychosomatic medicine, how your thoughts become your medicine, or your words or your vision. What you are seeing and how you are seeing, what you are saying and how you are saying is something that is being translated inside you into a chemical language. The secret sauce of this psychoneuroendocrine genetic engineering is how our lifestyle, our vision, our speech, and our eating pattern, our air, where we live, all these things are being translated into a genetic, how these things are inculcated into our genome, or how it is converted into a chemical language. So I am giving this psychoneuroendocrine genetic engineering therapy to cancer patients, diabetes patients, people who have viral diseases, autoimmune diseases, so somehow they get that mental strength. So psychoneuroendocrine genetic engineering is actually based, there are actually genetic based intervention are of two types. Genetic generic instrument for treatment and genetic disease specific instrument. This is actually the generic instrument or the
guidelines. This is actually that presentation which can be actually used by all those people who have no disease but who want to save themselves from certain diseases. They might have fear in their mind that they might suffer from a specific disease. So this treatment, this guideline or this intervention is actually given to those people or patients. So the time span of cancer. Cancer is not something that occurs in months or 1 year. It took decades for the cancer development. कैंसर लगने में पूरे 10 साल 20 साल लग जाते हैं, एक महीने में या 1 साल में नहीं लगता. तो फिर लोग चाहते हैं कि वो एक दम से वो ठीक हो जाए. People think that they would cure their disease in 1 month or 1 year, but if something that developed within decades and years, we can also then treat that disease within years. अगर कोई बीमारी 10-15 साल में लगी है तो उसे फिर 1 साल में आप ठीक नहीं कर सकते, उसमें 4 साल 5 साल लग जाएंगे. लेकिन वो जो इलाज होगा वो कम से कम मरीज को वो तकलीफ नहीं होगी जो उनको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी में मरीज को होती है. तो मेरे इलाज में मरीज को फिर ये मसला नहीं होता, क्योंकि दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, जहां पे वो अपनी थिंकिंग, अपनी विजन, अपना खुराक और अपनी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करके एक ऐसे लाइफस्टाइल में वो लेके आता है जहां से वो आराम से बीमारी से वो रिकवर हो जाए. So I am actually targeting the lifestyle, food, environment and behavior in 48 steps. This is a very important, like the 48 step that I'm actually talking about is actually the 48 nuclear receptors. You all are students of genetics or biotechnology or some biological sciences. You might know that human genome is actually regulated by 48 nuclear receptors. Endocrine receptors, adopted orphan receptors, and these are the different kinds of receptors, and they have their own ligands. Like glucocorticoid is actually a receptor that is regulated by cortisol. Mineralocorticoid is a receptor that is regulated by aldosterone. Progesterone is progesterone has its own receptor, androgen receptor, estrogen receptors, thyroid hormone receptor. So there are 48 nuclear receptors, and those 48 nuclear receptors have their ligands, and how we can increase or decrease the amount of those ligands, 48 nuclear receptor ligands. हम उन 48 न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के जो हार्मोन्स हैं या जो उनके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं उनका लेवल हम किस तरह बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं ताकि हम इन रिसेप्टर्स के बेस पे उन जीन्स की एक्सप्रेशंस को बढ़ा सके जो कैंसर को या किसी खास डिजीज को रोकने में मदद देगी, या फिर उन जीन्स की एक्सप्रेशंस को कम कर सके जो एक कैंसर या फिर एक दूसरी बीमारी को बढ़ाने में वो उनका रोल होता है. So this genetic mechanism that I'm actually talking about is based on the 48 nuclear receptors. The first thing that in these 48 receptors is actually the biological clock. अब मैं उन 48 हार्मोन्स या उनके जो रिसेप्टर्स है और उनके टारगेटेड जीन्स है उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं. उसमें पहला जो मतलब मैं टारगेट कर रहा हूं वो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक. You might have heard about that there is actually a clock inside our body. The central clock is present in our brain in the suprachiasmatic nucleus. And there are 37 trillion biological clocks in all of your cells. That central clock is connected with all those 37 trillion cells. आपके ब्रेन में जो मरकजी घड़ी है वो घड़ी बाकी सारे छोटे छोटे घड़ियों के साथ कनेक्टेड है. आप कितना खा रहे हैं, कितने टाइम बाद खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं सारा दिन, और किस क्वालिटी की आपकी जो विजन है वो किस किस्म की विजन है, वो भी वो मतलब कैलकुलेट कर रहा है कि ये चीज देख रहा है. और आपकी जो एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज जो आपकी है वो भी कैलकुलेट कर रहा है ये घड़ी. तो मैं आपको एग्जांपल दूं, इस तरह एक शख्स है, उसने, अब मैं आपको विजन और थिंकिंग के बारे में बताता हूं. अब एक शख्स है, उसने दिन में आधा घंटा वो जो है वो मनफी सोच रहा है या 1 घंटा वो मनफी सोच रहा है. तो बायोलॉजिकल क्लॉक को पता होता है कि ये शख्स आज 1 घंटा तो इसने मनफी सोचना ही सोचना है, खफा होना है, गुस्सा होना है. तो उसी हिसाब से वो फिर कहेगा कि अगर ये खफा और गुस्सा हो रहा है और कड़वी सोच मतलब वो रख रहा है या
गुस्सा और, तो उसी हिसाब से इतना कोलेस्ट्रॉल बनेगा। जब हम मंफी सोचते हैं या फिर कड़वा हम सोचते हैं तो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो बढ़ती है। तो वो फिर बायोलॉजिकल क्लॉक बताती है जिगर को कि आपने इतना कोलेस्ट्रॉल आना है तो आपने इतना साफ करना है। गुर्दे को बताते हैं कि इतना यूरिया आएगा तो आपने इतना यूरिया साफ करना है। लंग्स को बताते हैं कि इतना नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और जो बाकी टॉक्सिक केमिकल्स है वो आएंगे तो आपने वो सारे साफ करने। The central clock and peripheral clocks are connected and these are the cues for the biological clock. इसने नाश्ता, अब एक शख्स है वो नाश्ता स्किप कर रहा है, वो कहे मैं डाइटिंग कर रहा हूं, मैं अपना वेट लॉस कर रहा हूं, तो वो नाश्ता स्किप कर रहा है तो बायोलॉजिकल क्लॉक को पता है अगर ये नाश्ता स्किप कर रहा है तो फिर मैं उसी हिसाब से खुराक की एक्सक्रीशन करूं। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर एक्सक्रीशन ज्यादा होती है, सेल टर्नओवर रेट जो है वो ज्यादा होती है। रेगुलेशन एंड एजिंग। Some people, you might have seen that people in their 60s and 70s looks like people in their 30s and 40s. That's because those people are actually who are actually very conscious about their health and want to live to 100. Like there are people who have 100 years of life, and what are those factors which keep them actually very healthy in their 80s and 90s also? So for that you need to study biological clock. There is one thing missing, the all responses. All responses are equal to our feedings and feelings. Adult and fetal gut absorption, food and small and large intestine. अब ये जो स्लाइड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रांसपोर्टर्स आप देख रहे हैं, ये जीन्स, ये प्रोटीन्स हैं, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के ट्रांसपोर्टर है। ये ग्लूटामीन, हिस्टिडीन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन और ये सिस्टीन, वेलिन, फिनाइलएलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के ट्रांसपोर्टर्स है। तो जिस तरह एक शख्स सोच रहा है उसी तरह उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर मैं मनफी और कड़वा और सख्त सोच रख रहा हूं तो मेरे गट से, मेरे ब्लड में यही चीजें आएंगी, या फिर मेरे ब्लड से मेरे ब्रेन में वही सारी चीजें जाएंगी। ये जो ट्रांसपोर्टर्स है ये बच्चों में जो है क्या होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस इन द एडल्ट एंड फीटल गट एब्जॉर्प्शन। ये ट्रांसपोर्टर बच्चों में ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन जब इंसान बालिग होता है, उसकी थोड़ी बहुत अकल और समझ आती है, तो फिर ये ट्रांसपोर्टर के साथ एक एक्स्ट्रा जीन का एक पोर्शन लग जाता है यहां पे या यहां पे, तो वो फिर आपके सोच के साथ वो कनेक्ट होता है। जिस तरह आप सोचेंगे वैसे ही ये ट्रांसपोर्टर ओपन होंगे, एक अमाइनो एसिड अंदर जाएगा। जब बच्चों में ये ऑटोमेटिक है, लेकिन बड़ों में फिर ये ऑटोमेटिक नहीं रहते। ये फिर आप जिस तरह देखते हैं, जिस तरह सोचते हैं, वैसी चीज आपके अंदर आएगी। ब्लड गट से ब्लड में और ब्लड से आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। So that was actually about the transporters and this is about fasting. अब वो जो मैं आपको 48 रिसेप्टर्स बता रहा था जिनके हार्मोन जो हैं ऊपर नीचे होते हैं, तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो खुराक ना करने से बढ़ता है। ये एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। पेन अगर किसी को हो रहा है, एंटी पेन भी है। ये मतलब ये दर्द भी खत्म कर रहा है, बैक्टीरिया भी, वायरस भी, कैंसर भी। तो ये जब हम खुराक नहीं खाते रोजे में 18 घंटे 16 घंटे, तो इसका मिकदार जो है, गुर्दे देखते हैं कि ग्लूकोज कम हो रहा है, फैट्स कम हो रहे हैं, अमाइनो एसिड्स कम हो रहे हैं, तो ये हार्मोन बढ़ता है। लेकिन कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी है, अगर कोई स्ट्रेस में है तो भी ये बढ़ता है। लेकिन रोजे में ये जो स्ट्रेस होता है वो असल में फूड का स्ट्रेस होता है कि फूड नहीं है तो ये बन रहा है। तो रोजे का जो कॉर्टिसोल है और वो जो स्ट्रेस का, इसमें फर्क है। तो कॉर्टिसोल का लेवल आप किस तरह बढ़ा सकते, अगर किसी को पेन हो रहा है तो वो एक टाइम का वो लंच है या फिर वो ब्रेकफास्ट है या डिनर है वो स्किप कर ले, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, तो पेन आपका रिड्यूस हो सकता है। या अगर कोई किसी को मतलब ट्यूमर से काफी बड़ा है तो वो फिर 2-3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने, 40 दिन, 60 दिन, जितना भी आप रख सकते हैं वो शख्स रोजा रख सकता है, तो वो उसका एक कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा और कैंसर या फिर वायरस या बैक्टीरिया वो खत्म होगा।
अब जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये फिर जब हम पानी नहीं पीते, रोजे में हम खुराक तो नहीं खाते लेकिन पानी भी नहीं पीते, तो जब हम 16-18 घंटे पानी नहीं पीते तो ये एल्डोस्टेरोन जो ब्लड में जो वाटर लेवल है वो कम होता है, तो किडनी डिटेक्ट करता है कि ये तो पानी कम हो रहा है और गंज जो है हमने साफ करना है, तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा लेता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो हमारे गुर्दों और जिगर और स्किन जो मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन वाले ऑर्गन है लंग्स में, उनमें जो वाटर फिल्टर्स की मिकदार है ना वो बढ़ाता है। अब इस कमरे में 4 खिड़कियां है, तो अगर यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पे जो एयर है वो बहुत मतलब खराब हो रहा है, तो फिर ये खिड़की अगर हम 8 कर लें या फिर 10 कर लें तो यहां से ज्यादा आराम से गंदी हवा निकलेगी और साफ हवा आएगी। तो उसी तरह कम पानी से, और वहां जब हम पानी नहीं पीते तो वो एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है, तो वो जो ट्रांसपोर्टर्स है किडनीज में और जो गट में, वो फिर उसकी मिकदार भी बढ़ती है। तो कम पानी से गंद भी निकलता है और साल्ट लॉस भी नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा लोग कहते हैं कि 8 गिलास पानी पिए, 10 गिलास पानी पिए, इससे आपकी मतलब वो बहुत मतलब सेहत बेहतर होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आपकी मतलब वो पेशाब का मिकदार भी बढ़ता है, तो उससे साल्ट लॉस होता है। डायबिटिक पेशेंट्स को ये मसला होता है कि उनके ब्लड बॉडी में साल्ट की बहुत कमी होती है, क्योंकि वो बार बार पेशाब करते हैं या फिर उनको प्यास लगती है और भूख लगती है और उनका जो पेशाब का मिकदार है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उनका साल्ट लॉस बहुत ज्यादा होता है। फिर तो साल्ट एक ऐसी चीज है, अगर वो कम होगी तो फिर उसका मिकदार दोबारा एक नॉर्मल लेवल पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो रोजे जो पानी का रोजा है, जहां पानी नहीं पीते, तो उसका ये फायदा है, उससे आपके गुर्दे जो है वो बेहतर होंगे। अगर आप गर्मियों में और सर्दियों में रोजे अगर आप पानी नहीं पी रहे तो आपके गुर्दे और आपका जिगर जो है वो बेहतर हो रहा है। They have kidney stones, and diabetes as well. To decrease the level of water? No, he can still fast. वो फिर भी रोजा रख सकता है। मैंने कहा रोजा जो है वो खुराक की मिकदार अगर कम हो रही तो यूरिया भी कम बनेगा, गुर्दे पे बोझ कम होता है। हम जब एक्स्ट्रा खाना खाते तो ये गुर्दे के लिए बोझ है, जिगर के लिए भी ये बोझ है, क्योंकि फिर कोलेस्ट्रॉल बनेगा, फैट्स बनेंगे और ये यूरिया बनेगा। तो गुर्दे का के लिए अगर हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो ये गुर्दे और जिगर के लिए बोझ है। अगर हम कम खा रहे हैं और कम पी रहे हैं तो मतलब ये किडनीज और लिवर के लिए रिलैक्सेशन है। तो वो पेशेंट जिसको डायबिटीज भी हो और जिसको किडनी स्टोन्स भी हो, अगर वो रोजा रखे तो उसके लिए ज्यादा फायदा है। तो कुरान शरीफ की आयत भी ऐसी है कि अगर एक मरीज है और वो अगर उसे पता हो तो उसके लिए रोजा ज्यादा बेहतर है। अगर कोई मरीज या सफर में तो वो रोजा ना रखे, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये आपके लिए बेहतर है। I'm sorry, I am not getting your question. Would you please? हाँ, वो पे डिपेंड करता है कि किस चीज का स्टोन है। स्टोन जो है वो सिस्टीन के भी होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के भी होते हैं, स्टोवाइट के भी होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्टोवाइट है, सिस्टीन है और एक दूसरा है। 5 टाइप स्टोन है ये। तो अब वो डिपेंड करता है कि वो अगर टेस्ट कर ले कि वो किस किस्म का स्टोन है, उसकी यूरिक एसिड लेवल कितना है। यूरिक एसिड के भी स्टोन्स होते हैं, तो उसी बेस पे हम फिर मरीज को हम गाइड करते हैं कि जिस किस्म का मतलब अगर वो यूरिक एसिड के स्टोन्स है तो फिर वो गोश्त बिल्कुल खत्म कर ले। The precise art of right speech. What, how and why of speech. Words turn into a chemical language. Sweeteners or sour, dense/notch is equal to harm/shatter. अब ये जो टॉपिक है ना, ये असल में आपके कुछ अंदर पाथवेज हैं। हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे का नाम सुना है आप लोगों ने? WNT सिग्नलिंग पाथवे का नाम सुना है? हेजहॉग WNT नहीं सुना है नाम? तो आप लोग क्योंकि जेनेटिक्स ही बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग इसके बारे में जरूर पढ़े। अगर आपको कैंसर में या हेल्थ साइड पे इंटरेस्ट है तो फिर आप हेजहॉग WNT सिग्नलिंग पाथवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सोच है, हमारे एक ज़हन में एक लफ्ज आ रहा है तो वो अंदर एक केमिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है।
आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज या आपकी एक नजर वो 37 ट्रिलियन केमिकल्स में तब्दील हो रहा है। तो आपका एक अच्छा लफ्ज जो है वो अंदर 37 ट्रिलियन अच्छे केमिकल्स बना रहा है, और आपका एक मनफी लफ्ज जो है अंदर 37 ट्रिलियन टॉक्सिक केमिकल्स बना रहा है। तो ये जानने के बाद आप लोगों का अगर कोई स्ट्रेस टाइम है या फिर आप वहां पे मनफी सोच रहे हैं तो उस टाइम को आपने रिड्यूस करना है, ताकि बायोलॉजिकल क्लॉक कैलकुलेट करके इस शख्स का जो अब नेगेटिव टाइम गुजर रहा है वो एक कम करता जा रहा है। जितना वो कम, but still they are in that situation that they have to, like, they are compelled to think negative and be angry. So if you remember these things, then you would be able to calm yourself down quickly. क्या इन चीज बातों से? हाँ हाँ, तो अगर आपको अपनी हेल्थ की परवाह हो तो आप खुद को जल्दी काम कर लेंगे। एक स्ट्रेस में तो वो पॉजिटिव सोचेगा ना, वो फिर होपफुल होगा कि चलो ये बुरा वक्त जो है या जो टेंशन है खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव सोचेगा। इसका पॉइंट ये है कि आप जो है वो जो मनफी सोच रहे हैं उसका आपके मनफी सोचने से वो मसला हल नहीं हो रहा, आपने पॉजिटिव सोचना है और मेहनत करनी है तो तब वो मसला हल होगा। These are the environmental factors which are translated into chemical factors. I'm just talking about these, like I'll just talk about, your question is going to be answered within this session. If I am saying something with a negative intention, अगर मैं एक गलत नियत से एक बात कर रहा हूं तो वो गलत नियत और वो बात अंदर में नॉच जीन की एक्सप्रेशन बढ़ाएगा। नॉच वो जीन है जो सेल की मैच्योरेशन रोक रहा है। अगर नॉच जीन की एक्सप्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब वो सेल मैच्योर नहीं होगा। अगर मैं एक गलत नियत से एक बात कर, इफ आई एम सेइंग समथिंग विद अ नेगेटिव इंटेंशन, with that intent that I want to harm someone or mock someone or to some ridicule someone, so that statement is going to increase my notch gene expression. But if I am saying something to somehow stitch, gather or benefit someone, अगर मैं एक ऐसी नियत से बात कर रहा हूं कि मैं किसी को फायदा दूं, उसको मतलब किसी किस्म का मतलब जो टेंशन है वो खत्म कर सकूं उसका, तो वो बात जो है वो मेरे लिए पेज जीन की एक्सप्रेशन बढ़ाएगा। पेज जो है वो हिजहॉग सिग्नलिंग पाथवे में ये यूज हो रहा है और नॉट जो है नॉट सिग्नलिंग पाथवे। अब जो मैंने एक गलत बात या गलत काम किया है और मैं क्यों किया, मैंने बहुत अच्छा किया है और फिर मैं उस पर मतलब उल्टा खुश हो रहा हूं कि अगर मैं 100 बार खुश हो रहा हूं तो इसका मतलब है वो पाथवे अंदर 100 बार रिपीट हो रहा है। और अगर मैं उस पर पछता रहा हूं कि ये मैंने गलत किया है या मैंने गलत कहा है तो वो फिर अंदर पाथवे जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो आपका जो अब एक गलत बात या काम पे आप पछताते भी हैं, खफा होते हैं, तो उसका भी आपको फायदा है। या आपने एक अच्छा काम किया और उस पर आप खुश हो रहे हैं कि मैंने सही किया है या मैंने सही कहा है, तो उस पर भी आपको फायदा है। आपका पेज जीन जो है उसका एक्सप्रेशन जो है उसकी जो अंदर सिग्नलिंग है अंदर जो फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू योर न्यूक्लियर जीनोम, दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। Environment and genes. Now this topic is about, like, most of the people think that it's in our genes, but most of the diseases are not genetic. It depends on the environment. If you put someone in a very healthy environment, उसकी जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, तो वो उसका उस पर अच्छा असर होगा। He will turn into a good human being. लेकिन अगर उसकी फैमिली बैकग्राउंड या फिर उसके जो फ्रेंड्स हैं, he is living in a negative circle, तो वो he will turn into an evil person. This is actually about half-heartedness doesn't reach into majesty.
This slide is actually about the titin proteins. इसका ये टाइटन प्रोटीन देख रहे हैं ये, these are like springs. So if there are research studies which suggest that stomach ulcers, arthritis, back problems, headaches and chronic pain are because of bearing grudge. अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया या आपके कुछ गलत कहा है और उस पर आप खफा हैं, तो वो आपके दिल में एक ग्रज वो रहता है. तो वो ग्रज का अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे आप देख सकें, तो यहाँ पे ये जो म्यूटेशंस होती है एक अमाइनो एसिड्स या एक न्यूक्लियोटाइड की, तो अगर सिस्टीन बनेगा तो यहाँ पे ये स्प्रिंग्स जो है, ये देखिए इसका जो दो सर्कल्स है, ये और दो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे देखिए. तो अगर यहाँ पे सिस्टीन की मिकदार बढ़ेगी तो ये स्प्रिंग टाइट होगा. अगर आप ग्रजेस रखेंगे तो आपके जो टाइटन प्रोटीन्स हैं वो उसकी जो टाइटनेस है वो बढ़ेगी. दिल पूरी तरह फूल नहीं सकेगा, पूरी तरह बंद भी नहीं हो सकेगा. द हार्ट विल नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली एंड रिलैक्स कंप्लीटली. तो वो खून फिर कहां, बालों के जड़ों तक या फिर जो उंगलियों के सिरों तक खून फिर नहीं पहुंचता. तो यहां पे एक्सट्रीमिटीज में न्यूरोपैथीज हो सकती है मुझे, और बाल मेरे जड़े, अगर बाल मेरे खराब हो सकते हैं उससे, अगर खून नहीं पहुंच रहा मेरे बालों के जड़ों तक. मेरा जो स्किन है वो खराब हो सकता है अगर मैंने ग्रजेस रखी हुई है दिल में. लेकिन अगर वो ग्रजेस मैं रिमूव कर लूं, मैं खुद को मतलब मैं फ्लेक्सिबल बनाऊं, इफ आई एम मोर काइंड, और मैं वो सारे ग्रजेस जो है रिमूव कर लूं, तो फिर वो टाइटन प्रोटीन जो है वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे. तो खून जो है वो पूरी तरह एक ऑर्गन के एक्सट्रीमिटीज में और सारे जो मेरे बॉडीज के ऑर्गन है वहां तक पहुंच सकेगा. ये एक म्यूटेशंस आपको मतलब यहां से आपके दिल के जो मतलब धड़कन है उसको खराब कर सकती है. और आपको पता है कितना मतलब दिल कितनी बार दिन में धड़कता है. तो हार्ट फेलियर जो है ये एक बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर डाइंग आर एक्चुअली डाइंग बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. Heart failure is very common, not just in Pakistan, but all over the world. So for that, you have to be very kind and you have to be able to forgive people easily. You shouldn't be very stubborn or very, आपको इतना जिद्दी नहीं होना इस चीज में कि नहीं मैं तो बस माफ नहीं करना, मैंने तो बस बदला लेना है, अब मैंने भी कुछ कहना है, मैंने भी कुछ करना है गलत. तो आपने ये सब कुछ नहीं करना. आपने खुद को जरा ब्रॉड माइंडेड करके आगे बढ़ना है. The precise purpose of a heartbeat. अब जो आपके मसल्स हैं, they are glands and they send messages with every single move. आपके जो मसल्स हैं ये क्या है, ग्लैंड्स हैं, और हर बीट पे ये जो है क्या कर रहे हैं, they are secreting messages to your blood. Muscles do ask our brain the purpose of the move. अब अगर मैं यहां से किताब उठा रहा हूं तो मैं अपने बॉडी मसल्स को बताऊंगा मैं जाके ये बुक उठाने जा रहा हूं, तो मेरे मसल्स ये बात रजिस्टर्ड करेंगे. मेरे जो स्पाइनल कॉर्ड के वो जो डिस्क से वहां पे भी रजिस्टर होगी ये बात, और मेरे ब्रेन के जो सेरेबेलम है वहां पे भी रजिस्टर होगा. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट मूव, कि मैं जो करने जा रहा हूं उसका मकसद क्या है. तो ये सब कुछ अंदर रजिस्टर्ड होता है. तो ये तो मसल्स, ये तो सबको पता है कि मैं काम करूं तो ये मैं मतलब मैं बॉडी को पता मैं जाके वो बुक उठाने जा रहा हूं, तो मसल्स वो काम करेंगे तो वो रजिस्टर्ड करेंगे. लेकिन जो काम मैं अपनी सोच में कर रहा हूं वो काम मेरा दिल और फेफड़े कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मेरे सारे मसल्स जो है रिलैक्स हैं. मैं बैठा हूं या मैं लेटा हूं उस वक्त, और मैं मनफी सोच रहा हूं या पॉजिटिव सोच रहा हूं, तो उस वक्त मेरी मनफी या पॉजिटिव सोच जो है वो काम जो मैं ख्याल में कर रहा हूं वो मेरे फेफड़े और मेरा दिल कर रहा है. अगर मैं दिल में किसी को कत्ल कर दूं या फिर उसे मतलब उसके लिए कुछ बुरा सोचूं या उसके लिए कुछ अच्छा सोचूं, तो वो काम मेरे फेफड़े और दिल ने कर लिया. मेरे फेफड़े के जो मसल्स हैं या फिर मेरे दिल के जो मसल्स हैं वो उन्होंने कर लिया, और वो ये मैसेज जाके ब्लड तक पहुंचाएंगे. IL-15 एक साइटोकाइन है, और वो अगर एक सेल से निकलता है तो उस पर नेचुरल किलर सेल अटैक करते हैं. नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर IL-15 के रिसेप्टर्स होते हैं. तो अगर एक मसल सेल से क्या कि वो, तब अगर वो दिल का मतलब वो एक
हार्ट का मतलब साइटोकाइन हो या किसी और मसल से निकल रहा है L15, तो नेचुरल किलर सेल्स जाके उस सेल को किल करेंगे। तो हार्ट अटैक के लिए फिर एक मतलब आई एम डूइंग आल्सो कार्डियक रिमॉडलिंग, हाउ वी कैन टर्न आवर हार्ट मसल्स इनटू मोर हेल्दी और स्ट्रॉन्गर मसल्स फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। So for that, muscles of our heart and lungs move automatically all the time. So what we are doing or deciding in our thoughts is something that is being done by our muscles in the heart and lungs. This topic is about oxygen. You might have seen that people can survive without food and water for 2 or 3 days. But people cannot survive without oxygen for 1 or 2 minutes. अगर एक शख्स पे ऑक्सीजन बंद कर दी जाए 2-3 मिनट के, तो वो उसकी क्या होगी, डेथ होगी। तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर हेल्थ। इसमें फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर, लिविंग और स्टेइंग प्लेसेस, जहां पे आप ये क्लास है तो यहाँ पे फ्रेश, आप जहां पे आप जाएंगे, अगर आप ट्रांसपोर्ट करेंगे घर में जहां पे आप रहते, तो वहां पे आप जरूर चेक किया करें कि वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई सही है, फ्रेश एयर आ रही है वहां पे। ज्यादातर ऑफिस में या फिर शॉप्स के इस जगहों पे होती है जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं होती, तो वहां पे लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लिविंग और स्टेइंग प्लेसेस, keep a window open or install an exhaust. So there are 180 toxic chemicals in our exhaled air. 180 जहरीले केमिकल्स होते हैं हमारे एक एक्सहेल एयर में, और अगर फ्रेश सप्लाई नहीं है तो फिर वो टॉक्सिक केमिकल्स तो लंग्स ने निकालने हैं ना, तो वो फिर लिवर, कोलोन और किडनी रिमूव करती है। तो अगर किसी को हेमोराइड्स होते हैं फैमिली में, या किसी को पता है कि हेमोराइड्स हैं, या फिर ये जो लिवर के डिजीज है, या फिर किडनी स्टोन्स है, इसका मतलब है कि उनका एयर जो है वो फ्रेश नहीं है, या तो वो एयर कंडीशनर और हीटर बहुत रेगुलर यूज कर रहे हैं, या फिर उनके कमरे और दफ्तर या जहां पे वो काम कर रहे हैं वो बहुत बंद है। People living in closed environments, psychological stress and oxidative stress. आपकी जो सोच की स्ट्रेस है ना, वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रही है। This slide is about the advantages of winters and summers. सर्दी और गर्मी दोनों इलाज है। अब लोग अक्सर में, कुछ लोग सर्दियों से तंग होते हैं, कुछ गर्मियों से तंग होते हैं, तो ये गर्मी असल में एक इलाज भी है और सर्दी भी इलाज है। तो ये कैसे इलाज है, इसके बारे में आपको इस स्लाइड से पता चलेगा। In winter, common cold, flu and cough, COPD, asthma are common. विंटर की एक्सपोजर एक शख्स की जितनी बढ़ेगी तो उसके बॉडी में ब्राउन फैट्स बढ़ेंगे। एक व्हाइट फैट्स होते हैं, एक ब्राउन फैट्स होते हैं। तो ब्राउन फैट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ब्राउन फैट्स आर हायर देन व्हाइट फैट्स। तो अगर बॉडी में ब्राउन फैट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है कैंसर से या फिर किसी दूसरी डिजीज से आसानी से उसकी जो है रिकवरी हो सकती है। तो सर्दियों में बहुत ज्यादा मतलब जो स्वेटर्स हैं या बहुत हेवी जो चीजें हैं वो नहीं पहननी चाहिए, ताकि कोल्ड एक्सपोजर अगर बढ़ता है तो आपके बॉडी में ब्राउन फैट्स बढ़ते हैं। इससे आसानी से वेट लॉस भी हो सकता है। कोई चाहता है कि मैं वेट लॉस करूं विदाउट एक्सरसाइज और फूड, देन ही और शी कैन गो थ्रू विंटर ट्रीटमेंट, बिकॉज इन विंटर देयर इज हाई ऑक्सीडेटिव पावर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हाउ टू स्टे काम इन समर्स, बहुत सारे लोग गर्मियों से तंग होते हैं कि गर्मी आई है, हमारे पास एयर कंडीशन है या नहीं है, लेकिन गर्मियों से लोग तंग हैं। तो गर्मी जो है ये असल में कैंसर का इलाज है। थर्मोथेरेपी के नाम से एक ट्रीटमेंट भी मतलब दुनिया में है ब्लड कैंसर्स के लिए, जहां पे मरीज को एक गर्म कमरे में 3 घंटे के लिए बिठाया जाता है ताकि उसके बॉडी से जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो निकल जाए।
तो जितनी गर्मी बढ़ेगी और एक शख्स उसके फैमिली में किसी को मतलब कैंसर है तो वो फिर आप इस तरह करें कि उसको गर्मी का जो एक्सपोजर है उसकी बढ़ाए उनकी। तो इससे ये फायदा होगा कि वो जो समर, अब एयर कंडीशन का नुकसान ये है कि वो गर्मी का फायदा भी आपका खत्म होता है, उसके जो गर्मी का फायदा होता है एयर कंडीशन से, उल्टा गर्म सर्द से अंदर का जो सिस्टम है वो भी खराब होता है। ये अंदर जो गर्मियों का सेटअप है वो एक है, सर्दियों का दूसरा सेटअप है, जेनेटिक मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चेंजेस आती है। और साइकोलॉजिकल स्टेट इन द इनर क्लॉक। अभी जो बायोलॉजिकल क्लॉक ही नहीं कैलकुलेट करता है कि एक शख्स जो है वो खुश कितने टाइम के लिए है और वो स्ट्रेस कितना है या फिर वो गुस्सा कितना है। ये 3 जो है मेन स्टेट्स हैं जिससे हमारा जो जेनेटिक डेटा है वो खराब हो सकता है या फिर बेहतर हो सकता है। तो वो जो बेटर स्टेट है या फिर वो जो एक हार्ड स्टेट है, गुस्से वाला स्टेट है, उसकी मिकदार कितनी है, उसी हिसाब से अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक ये चीजें रेगुलेट कर रही है। द इनर क्लॉक कैलकुलेट द टाइम स्पेंट इन दीज 3 स्टेट्स एंड द लाइट एब्जॉर्ब एंड अकॉर्डिंगली रेगुलेट the cleanliness and repair of our stem cells and all around our body. समझ आ रही है आपको इसकी कि the biological clock is actually calculating that time spent in a better thinking states, in a positive thinking state and in a hard or cruel thinking state. विटामिन डी, विटामिन डी जो है ये आपने ये सुना होगा कि विटामिन डी जो है सूरज में बैठने से ये बढ़ता है इसकी मिकदार। तो ब्लड में विटामिन डी की मिकदार गर्मियों में ज्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है विटामिन डी की मिकदार। और अगर एक शख्स जो है वो पॉजिटिव सोच रहा है तो उसकी विटामिन डी मिकदार वो बढ़ेगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम जो खुराक खा रहे हैं उसमें भी सनलाइट की एनर्जी है। तो अगर एक शख्स पॉजिटिव सोच रहा है तो उसकी माइटोकॉन्ड्रियल जो हार्वेस्टिंग पावर है वो बढ़ती है, तो उसकी पूरी एनर्जी या हीट जो है वो हार्वेस्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहां पे विटामिन डी का जो सिंथेसाइजिंग एंजाइम है उसके साथ अटैच है। तो अगर वो पॉजिटिव सोच रहा है तो उसकी विटामिन डी की मिकदार अंदर उसकी सिंथेसिस भी बढ़ेगी। If you are positive and kind, it means that your vitamin D synthesis is increasing. सिर्फ सूरज में बैठने से आपका विटामिन डी नहीं बढ़ेगा या फिर दवाई या खाने से विटामिन डी। अगर आप पॉजिटिव सोचो तो आपका विटामिन डी बढ़ेगा, आप नेगेटिव सोचो तो आपका विटामिन डी कम हो रहा है। और विटामिन डी जो है आपके बोन्स को, आपके गट को, आपकी स्किन को, आपके बालों को, तकरीबन सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके लिए बहुत जरूरी है। इसका अपना रिसेप्टर से जिसको ये बाइंड करके उन जीन्स की एक्सप्रेशन बढ़ाता है जो कैल्शियम, फॉस्फेट, इनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है गट में। गट में कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो खुराक में तो होती है लेकिन उसको फिर ब्लड में आने के लिए ट्रांसपोर्टर्स की जरूरत होती है और उन जीन्स की एक्सप्रेशन जो है वो विटामिन डी बढ़ाता है। तो अगर एक शख्स पॉजिटिव सोच रहा है तो उसकी विटामिन डी लेवल बढ़ेगी, तो ये जो विटामिन डी लेवल बढ़ेगी तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर वो मंफी सोच रहा है और स्ट्रेस में और ऊपर से वो दवाइयां भी खा रहा है विटामिन डी की, तो उल्टा उससे नुकसान होगा। उसको सर दर्द होगा, उसको मतलब दिल के मसले हो सकते हैं, स्किन के इश्यूज आ सकते हैं, गट वाले, स्टमक वाले प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो विटामिन डी के टैबलेट्स आप अब बिल्कुल लेने ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ले रहा है तो फिर वो पॉजिटिव सोचे या खुद को मतलब जल्दी काम करें। दिस इज अबाउट टाइम सर, आई विल जस्ट समहाउ कट इट शॉर्ट। ओके सर। सो विटामिन ए इज एक्चुअली वन अदर, वो जो मैं कह रहा हूं कि 48 रिसेप्टर्स में से एक विटामिन डी भी है लेकिन एक विटामिन ए है। विटामिन ए ये आपके नजर का कागज है। इससे अंदर क्या बनता है, रेटिनोइक एसिड, और रेटिनोइक एसिड का अपना रिसेप्टर है, रेटिनोइक एक्स रिसेप्टर और रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, ये 2 किस्म के रिसेप्टर्स हैं। ये फिर विटामिन डी रिसेप्टर के साथ बाइंड करते अंदर अपना इफेक्ट जो है वो करते हैं। Retinoid X receptor is binding, making a dimer with all of the receptors. Vitamin A acts like a paper for the light we absorb through our ocular and cerebral vision. एक तो वो जो हम बाहर देख रहे हैं, एक वो चीज जो हम अंदर सोच में देख रहे होते हैं। तो उन दोनों के लिए विटामिन ए जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर टर्निंग दैट, अब्सॉर्बिंग दैट लाइट वी आर सीइंग।
तो वो रेटिनोइक एसिड में तब्दील हो रहा है। तो रेटिनोइक एसिड भी फिर दो किस्म का है, 9 सिस रेटिनोइक एसिड और 13 सिस रेटिनोइक एसिड, और वन है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। तो 9 सिस और 13 सिस रेटिनोइक एसिड के इफेक्ट जो है वो आपके स्किन पे, विजन पे और आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम है उस पर बहुत अच्छे हैं उसके इफेक्ट्स। लेकिन ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड जो है वो फिर उसके इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। सिग्नल सेल्स, the kind of light we absorb, violet, blue, red, UV, IR, infrared. ये भाई अगर आपको कोई मतलब इसके पॉइंट्स पे यही कि अगर आप अच्छा देख रहे हैं, if there is more appreciation in your eyes for the world and the people around you, then you have actually a good vision. Your vision is going to be 6/6. But if you are mostly criticizing and you're like finding faults, so then your vision is somehow going to be like you are thinking negative because you are being able to see the negative things around you. But if you are being able to see and appreciate the positive things around you in your friends and family circles, then your vision is going to be improved. But also that your vision is also affecting your genetic data through retinoic acid receptor and retinoid X receptor. There are over 206 bones, 350 joints and 700 muscles. This slide is actually about our movements. एक रिसर्च स्टडी हुई थी, उसमें यह पता चला कि हम अगर हर 2-3 घंटे या 4 घंटे बाद अपने मसल्स या बोन्स को हरकत देंगे तो अंदर जो स्टेम सेल्स है बोन्स के अंदर वो हेल्दी रहेंगे। ये जापान की स्टडी थी। तो ये जो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो उसमें भी जो टाइमिंग है वो उस स्टडी के टाइमिंग से मैचिंग है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो आपके बोन्स को और उसके अंदर जो स्टेम सेल्स है उनको वो खुराक और ऑक्सीजन जो है वो मिलती है। जब आप मूवमेंट करते हैं तो अंदर खुराक और ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाकी गैसेस है वो निकलती हैं। अगर आप अपने मनफी सोच, अगर इंसान अपना मनफी सोच और उसकी जो सख्त जो हालात टेंशन है वो अगर वो कम नहीं कर सकता तो वो अपने अच्छे अल्फाज और अपने अच्छे कामों की मिकदार को वो बढ़ा सकता है। नमाज हो गया या जो आप घर के जो काम होते हैं, अगर आप बर्तन ज्यादा धोते हैं, घर के जो बाकी सारे काम है वो सब आप कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। इससे फिजिकल एक्टिविटी जितनी बढ़ेगी। बुक्स रीडिंग, आप अपनी पसंद के बुक्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं, या फिर अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो वो अपनी जिक्र से अपने अंदर के जो केमिकल्स की मिकदार है अच्छी वो बढ़ा सकता है, अच्छे रिपीट्स भी बढ़ा सकता है डीएनए की। दिस इज अबाउट द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ गुस्ल और बाथिंग। This is actually very important. After every sexual activity, if there is a bathing, it means that you are going to be saved from most of the viral and autoimmune diseases. There is one other hormone, dehydroepiandrosterone, which is scientists think that it is actually ये जवानी का फवारा है ये हार्मोन। जिसमें ज्यादा होगा तो वो उसकी जो है ज्यादा उम्र तक मतलब वो जवान रहेगा। dehydroepiandrosterone. And this hormone is actually produced in our body when we are not actually thinking toward the sexual side. If you are more celibate, तो ये हार्मोन्स हमारे अंदर बढ़ते हैं। जिस तरह खाना ना खाने से कार्टिसोल बढ़ता है, पानी ना पीने से एल्डोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, उसी तरह अगर एक शख्स जिनसी तौर पर पाक जिंदगी गुजार रहा है तो वो उसके अंदर ये हार्मोन बढ़ेगा। ये हिचहॉक सिग्नलिंग पाथवे है। A human life is a message. Human lifestyle is translated into hedgehog signaling, which are of 3 types: sonic hedgehog, Indian hedgehog, or desert hedgehog. अब अगर कुछ लोग उससे ऐसे होते हैं कि उनको आसानी से गुस्सा नहीं कर सकते, हम खफा भी नहीं कर सकते, तो उनके सोनिक hedgehog सिग्नलिंग सही होते हैं उनके। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, आपको कोई आसानी से खफा गुस्सा या तंग नहीं कर सकता, तो आपके सोने की झाग जो है वो सही जा रहे हैं। और ये कैंसर जिसका सोने की झाग सिग्नलिंग ज्यादा हो वो कैंसर से महफूज होता है। इंडियन हिजहाग ये है कि अगर एक शख्स है वो बजाहिर तो वो बहुत अच्छा है,
लेकिन अंदर जो है वो अगर किसी के बारे में कुछ कहता है तो उसमें इंसल्ट हो। कितनी आसान बात है कि हम ख्यालों में किसी को के लिए बुरा सोचते हैं, उनके लिए मतलब इंसल्टिंग बातें करते रहते हैं। तो वो जो अंदर हम इंसल्ट करते हैं अपनी सेल्फ टॉक में, वो इंडियन हिचहॉक सिग्नलिंग को खराब कर रहा है। ये फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जो हड्डियों जोड़ों की बीमारियां हैं, वो इसमें इंडियन हिचहॉक का बड़ा रोल है। तो अगर आप अपने आप से कुछ कहें तो उसमें बेइज्जती ना हो, सख्ती ना हो और मजाक ना हो, तो आपके इंडियन हिचहॉक सिग्नलिंग ज्यादा बनेंगे। ये वो अमाइनो एसिड से बनता है इंडियन हिचहॉक के जो जीन्स और इसका जो प्रोटीन है, जो जिसमें इंसल्ट ना हो, सख्ती ना हो और मजाक ना हो। Desert hedgehog is about sexual genital organs. Desert hedgehog. If I'm dressing in a way that is actually more seductive, then that is going to damage my desert hedgehog. But if I'm wearing a kind of dress which is actually very covered and I'm like not giving genital, I'm not easily being seduced by seductive dresses, that is going to increase my desert hedgehog signaling. When it comes to our health and life, it does not matter how much property, wealth, money or we have. We can't survive for long with it if our inner currency is depleting. मेरे पास चाहे कितना ही दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर मेरे अंदर का पैसा कम है या खत्म हो रहा है तो मैं उसके बगैर जो है जिंदा नहीं रह सकता। मतलब वो बाहर का पैसा जो है मुझे जिंदगी नहीं दे सकती अगर अंदर का पैसा मेरा कम हो रहा है। तो वो अंदर का पैसा क्या है, वो कैसे बनता है, कैसे मतलब बढ़ रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है और कैसे वो बन रहा है, तो उसके बारे में ये स्लाइड्स है। इट डज नॉट मैटर हाउ एम्पिक्यूनियस वी आर इफ और इनर करेंसी, अगर एक शख्स बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके अंदर का पैसा बहुत ज्यादा है, he can stay fit and healthy even after 100 years. So what is that inner currency? How is it produced? What consumes and decrease it? What restores or increase it? Around 450 million people are currently suffer from mental disorders. And that is because of there is a natural system of justice. अक्सर लोग ऐसे होते घर में या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो चाहते हैं कि वो भी फिर बुरा करे। तो आप अगर इंटरवीन करें किसी काम में तो उसमें आप कोशिश करें कि आप कुछ अच्छा करें, अगर आपसे अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा ना करें, क्योंकि वही जो आपने कुछ आप इंटरवीन करें, क्या उसने तो बुरा किया, चलो मैं भी बुरा कर लेता हूं, तो उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। तो यू शुड रिलाई ऑन द नेचुरल सिस्टम ऑफ जस्टिस। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो वो खुद ब खुद, दैट इज अबाउट मेंटल हेल्थ, sleep and behavior. The higher negative behavior during the day or before sleeping is equal to insomnia or late onset sleep. The higher positive behavior during the day or before sleeping is equal to early onset sleep. अगर आपने सारा दिन कुछ अच्छा क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव किया है, कुछ ना कुछ आपने किया है सारा दिन, तो आपके अंदर का मेलाटोनिन लेवल जो है वो बढ़ेगा। और अगर आपने कुछ खास पॉजिटिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं की तो आप उल्टा आपने नेगेटिव सोच या कुछ मतलब क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव करने के बजाय आपने कुछ डिस्ट्रक्टिव किया है, तो उल्टा आपका जो है ऑरिजिन हार्मोन है वो बढ़ेगा। ऑरिजिन अगर किसी का लेवल ब्रेन में ज्यादा हो तो फिर रात को उसे लेट नींद आती है, तो उस वक्त आप फिर ये कोशिश करेगा, आपने सारा दिन किया भी नहीं है ना, तो उस वक्त आप ये कोशिश करें कि उस वक्त खुद को जरा हम्बल कर ले, आजिज कर ले, तो आपको फिर नींद, अगर ऑरिजिन कम होगा तो आपका मेलाटोनिन बढ़ेगा, तो आपको नींद जो है वो आराम से आएगी। It is about the weakness, the limitation of our organs. Aging and organ function reduction damages it in structure, which limits its potential to work at normal rate. उम्र के साथ साथ जो अंदर ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है वो भी रिड्यूस होता है, कम होता रहता है। सो इंसान के जो रद्द-ए-अमल होता है वो चाहे किसी के लिए बुरा ख्वाहिश हो या फिर उसकी दुश्मनी, जो मतलब जो किसी के लिए आप सख्त सोच रहे हैं या फिर आपके दिल में कोई ग्रज है, तो या आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो ये अंदर जो है टॉक्सिक केमिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। और वो टॉक्सिक केमिकल्स कौन रिमूव करता है? आपका लिवर, लंग्स और आपकी जो किडनीज है। The human response,
अब medicines are analogs of the endogenous chemicals, not natural chemical messengers. अब जो हम दवाइयाँ लेते हैं ना, वो अंदर अंदरूनी जो chemicals हैं ना, उनके analogs होते हैं. मतलब वो अंदरूनी chemicals नहीं होते. हम अपने जिस्म को धोखा दे रहे होते हैं कि हाँ मैं तो मतलब ऐसा ही देख रहा हूँ, ऐसा ही सोच रहा हूँ. मतलब जो अंदरूनी केमिकल्स बन रहे हैं हमारे देखने, सोचने, खाने पीने और एक्टिविटीज से, वो जो हम मेडिसिन लेते हैं वो हम धोखा देते हैं जिस्म को. तो अगर हम ऐसा नहीं सोचते तो वो अंदर उसका साइड इफेक्ट्स, इसलिए दवाइयों के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं. मतलब हम जिस्म को ज्यादा देर तक धोखा नहीं दे सकते. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स यूज फॉर डेकेड्स. कीमोथेरेपी इज डीएनए रेप्लिकेशन ब्लॉकिंग एजेंट्स. अब कैंसर का जो ड्रग्स यूज हो रहे हैं उसमें भी डीएनए सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर रहे हैं. Cancer occurs after an organ weakness, so cancer is not decreasing but increasing lifespan in a damaged metabolic state and stressful circumstances. Chemotherapy ruins your already compromised organ survival. I have not talked about all those 48 receptors. I have just talked about a few of those receptors. Because I know that it would be very tiring or very boring for you people, because some of the things you might not have heard or you might not be able to understand. So I'm just cutting it short. But if there is any cancer patients or any cardiovascular disease patient or diabetes or autoimmune disease or viral infections, you can actually contact me and I will actually guide you about how their disease is going to be recovered. I have now patients in Australia, US, Africa, Pakistan, and also India. I have patients from India also, all across the world. And they are going to be like, they are improving with the passage of time. One of my cancer patients from Pakistan, she was suffering from triple negative breast cancer. That is a very very, I would say, malignant or most dangerous cancer, breast cancer. But she is now in stage 1 and she is recovering very fast. Because she is following all those things that I have actually guided her in. Very nice presentation. Thank you very much, Dr. Mehtab. I'm really impressed. Thank you. I think you are lucky that you just have a chance that you listen to Mehtab, and by now I think you would have realized that this is not conventional wisdom as people and even I would be talking about all the times, okay? Because I am just delivering lectures, I just go through the scientific literature and it's just a conventional way of doing things, I'm teaching you immunology from a different perspective, and he is using the same knowledge in a different perspective, and the success stories that he has shared, the number of patients that he has, in different countries, and people are recovering, also is an evidence, that actually these therapies, the counseling, genetic counseling therapies, they are working. And this, whatever he's saying is purely backed by scientific literature. And whatever, this is our training. This is what we have learned, that if you can provide some evidence for some therapy in the form of if the therapy is working or not, then of course we have to believe it. So this is not something like a kind of counseling that psychologists would do, and they would just talk about different conditions, that why are you tense and you should not do this thing or that thing. But that actually is not backed by scientific literature.
we don't know that what actually is happening deep down inside our bodies. But if you know that what are the different hormones produced during different conditions, then of course you uh, also would know that how to get the levels of these hormones high or low by doing different practices. So these are not only the therapeutics, the vaccines or the drugs and other things that you use for treating the conditions. Counseling is also very important for regulation of different. A very common example is just a piece of poetry, for instance. You can come across a piece of poetry that would, in the moment, just raise your emotions. And people in the past used to do that during wars. They would, recite poetry before the soldiers would go to fight with their enemies, and that would boost the morale of, the soldiers. They would fight very bravely after that. And there are poems, when you listen to these poems, you become very gloomy, for instance. Some people would start crying. So why are you crying? Because the words actually have turned into emotions. All these words actually are going to become chemical messengers inside. There are lots of chemical reactions that are taking place. And then all these are taking shape to, give you some phenotype. It can be sad or it can be happy. It depends upon these things. So the talk was very interesting. I perhaps, would miss on my presentation because we do not have much time for that.